Hello guys, this is papaya. Actually, we have three type of papaya. This is a local one. ये क्या है? Actually, this is a we call it bear apple. Berry. Berry. B-A-I-R. Bear apple. It's like an apple. Okay. I will give you one piece. Okay, just one. Wow. Right. Assalamu alaikum. My name is Fatima Ali Safri and welcome to yet another episode of Karak Scene. Karak Chai with Karak Baatein. Today we are going to talk about how important is your mental health, right? And for that we have an amazing guest, Mahmooda, who used to teach teachers and now helping us to have an awesome life as a life coach. Let's welcome Mahmooda. Thank you so much, Mahmooda, for coming to my show. Pleasure is all mine. Thank you for having me. I have to give you something. Oh, wow. Thank you. Organic, beautiful tomato. Inshallah, just being here is absolutely amazing. We just smelled a lemon leaf, and it was literally like smelling an essential oil. Absolutely beautiful. Subhanallah, I mean, how are we able to grow all of the stuff in the desert? It's really something to see. Mashallah. Okay, Mahmooda, tell me, how does your daughters describe you as? And what kind of mother are you? Oh my God, that is a tricky question. I think they would be the best people to answer that question. But I'm very playful, and we hang around a lot together. At the same time, we have really serious, reflective conversations as well. So I like to think it's a blend, honestly. But to be really honest, Fatima, I think I'm learning. I'm on the journey of parenthood and learning and unlearning as well a lot of things. Mahmooda, can you share a bit about your background and what inspired you to become a life coach? And what are your core values? So, I mean, I've been training and writing for a very long time. And I felt like with the training, it was very much like coaching, but I just wasn't calling it coaching. And then when I saw how coaching works, I was like, wait a minute, this is amazing. And then you asked me about my core values as a coach. And what I do is basically, I feel like all the answers that we ever need are in the book of Allah, are in the words of Allah, in the Quran. So I bring the wisdom of being a student of knowledge. I bring the wisdom of our deen and kind of take some principles from coaching and blend them together. It's Ada. Okay. Oh, bas. Looks good. Mahmooda, what personal struggles or turning points that led you become a life coach? With me, I was always had a bit of a doubt about what I really wanted to do. And when I started learning coaching, it helped me hone into what I really and truly wanted deep down. So things started becoming clearer for me. And there was also, I'll be really honest, there was a lot of unlearning I had to do as well in terms of parenting struggles or struggles with relationships, struggles with self-image, right? So I think coaching kind of helped me become more comfortable with who I am. कि मैं जैसी हूँ, मतलब ठीक है, obviously हर बंदा improve करता है, improve करने में कोई वो नहीं है, मगर मैं जैसी हूँ, I accept myself. I think self-acceptance, if you will, was definitely a struggle, and I think coaching really helped me. Obviously, I'm on a journey, to be honest, Fatima, like getting to self-acceptance as well. Yeah. Mahmooda, talking about mental peace. Yeah. In your work, have you come across of any women trying to find their mental peace? देखो Fatima, I work with a lot of clients जिनकी जो struggles and stories हैं, they're highly confidential, so I can't share a particular story with you. But some of the things that come up are anxiety, overthinking, self-image, not feeling valued,
or seeking validation from the world around them. Being in a victim mindset, ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी मैं देखती हूँ कि common है. Obviously struggles in parenting as well. तो ये चीज़ें जो है तो आती हैं. एंड particularly one more thing is कि यार ये जो noise है ना हमारे इर्द गिर्द, like and I don't mean the physical noise, I mean एक अंदर disturbance जो अंदर noise है ना, it cancels out that voice within. तो वो अंदर की एक आवाज़ सुनने के लिए sometimes you need to really go deep within yourself, you need to self reflect. And I think that is where coaching has मतलब by the grace of Allah, हमारी कोई ताकत नहीं होती है कि वो काफ़ी लोगों को उसने हेल्प किया है, बिकॉज विजडम हमारे अंदर होती है ना. तो मैं अपनी एक पर्सनल बात शेयर करूं तो देयर वाज वन टाइम इन माय लाइफ कि जब मुझे लगता था कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी मेरे साथ जिसकी वजह से आई वॉज लाइक मैंने अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो दिया था. मुझे लगता था कि मेरी कोई सेल्फ वर्थ है ही नहीं. मैं कुछ ऐसी चीज़ें करती थी कि जो मैं अब सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि लोग समझते होंगे कि इसको कुछ मेंटल प्रॉब्लम है. मैंने बहुत ट्राई किया बट मुझसे पता नहीं, मैं वो माइंड चैटरिंग चल रही थी, ओवर थिंकिंग चल रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आता था. माई वेरी डियरेस्ट अंकल, उनसे मैंने ये सब चीज़ें डिस्कस की. अच्छा, ही नॉट ओनली हेल्प मी विद लाइफ कोचिंग, उनसे मैंने घंटों बैठ के बातें की हैं. ही सजेस्टेड मी अ बुक. अच्छा, this book was I do not remember the name of the author, but it was like how to overcome your fears and how to start living. Wow. वो book, I have read this book over and over. मुझे लगा कि मैं उस कंडीशन से बाहर आ गई. सो इन योर केस, आप भी कभी कुछ ऐसा सजेस्ट करते हो अपने क्लाइंट्स को, कुछ ऐसा मटेरियल देते हो दैट दे शुड रीड एंड जिससे उनकी हेल्प हो सके? Absolutely. देखें, first of all, Fatima, I want to acknowledge you. Really proud of what you're doing. Mashallah, mashallah. I mean, you must be proud of yourself. And yeah, definitely breaking those shackles, getting out of that fear, and really starting living and starting Karak scene, which is with this beautiful mug of Karak chai right here in Wadi Al Amardi, which is a beautiful farm. Thank you. So yeah, you know, one of the things that I do definitely ask my clients to work on is feelings that are being ignored. ठीक है ना. तो देखो, माइंड चैटरिंग होती कब है, ओवर थिंकिंग होती कब है, जब हम किसी फीलिंग को एड्रेस नहीं कर रहे होते. ओके, अब मैं एग्जांपल देती हूँ. देखो, देयर आर टू इमोशंस दैट आर really पावरफुल एंड दैट आर really disturbing to feel, right? One is guilt, one is shame, another one is fear, right? और ये चीजें अगर कहीं बैक ऑफ द माइंड में होती है ना, तो यू नो दैट वार्म वॉश ऑफ शेम दैट यू जस्ट डोंट रियली वांट टू फेस, अगर वो कहीं पीछे होता है ना, तो उसको ब्लॉक आउट करने के लिए हमारा माइंड इधर उधर घूमने लगता है, राइट? सो व्हाट आई सजेस्ट इज टू रियली फेस दोज फीलिंग्स. अगेन, इट्स करेज, इट्स वल्नरेबिलिटी, राइट? टू फेस दोज फीलिंग्स एंड टू अलाउ योरसेल्फ टू फील देम. क्योंकि फिर क्या होता है कि फिर आपको क्लैरिटी मिलने लगती है और फिर आपके डिसीजंस कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ विजडम. They come from a place of inner knowing. Acceptance is a big one also. तो ये चीज़ है कि मैं सजेस्ट करती हूँ. और and there's a book that I really love, which has been very helpful in my journey. There are a lot of books actually. I love books. लेकिन एक किताब है जो मुझे अभी याद आ रही है. It's called Good Vibes, Good Life by Vex King. And he's a young guy. उसने एक किताब लिखी है, very clear, clean, precise wisdom in it. So Mahmooda, depression and victim mindset is what we see very commonly these days. बिल्कुल. Tell me, what is victim mindset? Okay, so to describe it in short, victim mindset is when you do not have a choice anymore. ठीक है, आप एक सिचुएशन में हैं और अब आप सफ़र कर रहे हैं और अब आप मिस्कीन हैं, बेचारे हैं, और अब आप उससे निकल भी नहीं सकते और आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपके पास कोई रास्ता नहीं खुला. आप किसी और एंगल से सिचुएशन को व्यू करने की एबिलिटी को खो देने का नाम है विक्टिम माइंडसेट. ठीक है, ओके. और विक्टिम माइंडसेट का प्रॉब्लम क्या है कि इंसान अपनी पावर लूज कर देता है, राइट? तो फिर आप एक डाउनवर्ड स्पाइरल में घुसते रहते हैं, आपको फिर उसमें से निकलने का कोई तरीका नजर नहीं आता. तो ये चीज़ है विक्टिम माइंडसेट. सो हम ये सोचते हैं कि लोग हमसे बेहतर हैं या हमारे बगैर ही सही हैं, हम लोगों से दूर होना शुरू हो जाते हैं, डिसीजन मेकिंग में हमें प्रॉब्लम हो रही है, राइट? तो तो उसके लिए फिर क्या सॉल्यूशंस है? हाउ टू कम आउट ऑफ विक्टिम माइंडसेट? राइट.
सो विक्टिम माइंडसेट के अंदर सबसे बड़ी एक चीज़ जो रियलाइजेशन है ना, जो सेल्फ अवेयरनेस है ना, वो ये है कि यू ऑलवेज हैव अ चॉइस. It's just about looking at things from different perspectives. It's about looking at things from a place where you hadn't before, right? जैसे आप अपनी चॉइस अपने हाथ में वापस लेते हैं ना, जैसे आप ये वापस लेते हैं कि नहीं, मैं इस सिचुएशन को खुद बेहतर बना सकती हूँ, मैं इस सिचुएशन से अगर चाहूँ तो निकल सकती हूँ. जब आप ये चीज़ अपनी चॉइस अपने हाथ में लेते हो ना, तो आपको पावर आती है. एंड इन माई पर्सनल लाइफ एंड ऑल्सो इन द लाइव्स ऑफ माई of the people that I have worked with, अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी इफेक्टिव रही है. सबसे पहली है कि कम्युनिकेटिंग एंड कनेक्टिंग बैक विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला, राइट? सही. अल्लाह सुब्हानहू व तआला साहिब कुन है, वो जो चाहे जब चाहे जैसे हो सकता है. और हर उम्मीद, हर हर भरोसा, हर आस उसी से है, राइट? सबसे पहले तो पहले ये है कि कनेक्टिंग बैक टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, कनेक्टिंग बैक टू हिज बुक इज the best strategy that I can, and to remember him by his names, because जब हम अल्लाह के नामों से अल्लाह को याद करते हैं तो हमारी बिलीफ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, बढ़ती रहती है, राइट? तो एक ये चीज़ है, ठीक है. सही. इसके बाद जैसे मैंने कहा कि प्रोसेसिंग इमोशन, कि जो इमोशन स्टक है ना अंदर, हाँ. जिसे हम फेस नहीं कर पा रहे, उसको जाके उसके ऊपर होन इन करना, कहना कि ओके बड़ी आई एम हियर टू फील यू, कम ऑन ब्रिंग इट ऑन, और उसे एक्चुअली फील करना. पता है, एक इमोशन अगर हमारी बॉडी में स्टक हो जाता है ना, तो वो फिर हमें प्रॉब्लम्स देता है, वो हमें सेल्फ सैबोटाजिंग बिहेवियर देता है, वो बॉडी पेन्स एंड एक्स देता है, राइट? तो उस इमोशन को प्रोसेस करना इज डेफिनेटली अ वेरी बिग स्ट्रैटेजी, राइट? एंड देन ऑफ कोर्स योर कंपनी, राइट? तो अगर आपकी कंपनी इस तरह की है ना, which leads you towards a growth mindset, which helps you positive, which gives you positive energy, gives you positive company, gives you good habits, good things to think about even, right? Because our thoughts become our actions in the end of the day, है ना? So great, good company is definitely another one, right? And of course, a growth mindset where you are constantly learning, constantly improving yourself. क्योंकि देखो, हम स्पेशली हम औरतें ना, हम क्या करती हैं कि हम थोड़ी सी स्टैग्नेंट हो जाती हैं. बच्चे बड़े हो गए, अच्छा भाई मैं अब मेरा क्या फायदा है, like kind of thing, right? So constantly learning, constantly improving yourself, constantly keeping your mind in things that are of benefit, both in dunya and akhirah, right? And also, I would advise a safe, non-judgmental place to offload. ठीक है ना, कि ऐसा कोई दोस्त होना चाहिए जिंदगी में. या of course, if you need a life coach, right? लेकिन ऐसे लोग जैसे आपके अंकल थे, राइट? तो ऐसे लोग होने चाहिए जिनके पास आप बगैर किसी जजमेंट के डर के ना बात कर सकें. सही. और उनसे ज़रूरी नहीं कि आप एडवाइस लें, एडवाइस भी ले सकते हैं, बट इवन जस्ट टू बी एबल टू कम्युनिकेट व्हाट्स गोइंग ऑन विद यू, राइट? एंड द लास्ट वन, do not compare yourself to anyone, ठीक है ना? Because everyone is on their own journey and everyone is fighting their struggles, ठीक है ना? सोशल मीडिया पे हो सकता है कि बहुत ही अमेजिंग उनकी फोटोज आती हो, लेकिन हमें नहीं पता कि पीछे क्या आ रहा है, राइट? और जैसे ही हम अपने आप को किसी से कंपेयर करते हैं ना, तो हम अपनी एनर्जी लूज कर देते हैं. हम अपने हाँ नहीं, और वो इट लीड्स अस टू दैट इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स. बिल्कुल, और वो सबसे ज्यादा नुकसानदेह है. बिल्कुल सही कहा. दैट्स अमेजिंग, अमेजिंग इंसाइट फातिमा, आई मस्ट से. क्योंकि इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, जैसा कि आपने कहा कि उसका मरीज तो फिर सीधा हो ही नहीं सकता, मतलब उसको बिकॉज इट्स समथिंग इनसाइड, राइट? ऑफ कोर्स हो सकता है अल्लाह की मदद से हर इंसान जो है तो वो अपने आप को बेहतर कर सकता है, मगर दैट्स अ डेंजरस प्लेस टू बी इन. अच्छा, ये एक और चीज कि यार देखो, लाइफ में जो भी बुरा आपके साथ हो रहा है, ठीक है, एक तो हम ये भी गिला करते हैं यार उसके साथ इतना अच्छा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? Exactly. तो अच्छा, ये वाली चीज कि वो एक्सेप्ट कर लेना कि यार जो भी हो रहा है खुदा की मर्जी से मेरे साथ हो रहा है. अच्छा, खुदा की मर्जी में राजी होना, आई थिंक उसमें आपका दिल जो है ना बड़ा जिसे कहते हैं ना बड़ा हो जाता है, और फिर वो कोई गिला रहता ही नहीं है. सही. क्या बात, ब्यूटीफुली सेड फातिमा. बिल्कुल ऐसे ही है कि जब आप सरेंडर कर लेते हैं एक तरह से अल्लाह ताला की विल पे, और नॉट एंड सरेंडर सर्टेनली डजंट मीन दैट आप हथियार डाल दें, बोले हाय मैं मिस्कीन, मैं बेचारा, नॉट लाइक दैट, बट सरेंडर इन अ स्टेट ऑफ फ्लो वेयर यू आर लाइक ओके, आई एम मतलब ये अल्लाह की मर्जी है, तो यहाँ से आई विल स्टार्ट. तो क्या खूबसूरत बात की आपने, बिल्कुल ऐसे ही है. सो या एज यू वर टॉकिंग अबाउट एक्सेप्टेंस, राइट? सो जब हम अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हैं विद एन ओपन हार्ट, विद वो है ना दुआ भी है ना कि रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला, व्हिच इज आल्सो पार्ट ऑफ एक्सेप्टेंस. लाइक मैं राजी हूँ अल्लाह, जो आपने जैसा मुझे बनाया, जैसा क्रिएट किया, मैं राजी हूँ, राइट? और फिर उस पॉइंट से जब हम अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, देन उस चीज़ में बहुत मज़ा है. But yeah, how do you differentiate between genuine challenges and self-perceived victimhood?
क्या बात है, क्या जबरदस्त क्वेश्चन है. एक्चुअली देखो, life is as we perceive it to be, right? Have you heard of the placebo effect? Yes. Okay, so there was a guy, he had cancer, okay, and उसका कैंसर बहुत ही अगले स्टेज पे था, ठीक है. एंड देन ही what happened was कि उससे एक ड्रग बताई गई कि ये ड्रग जो है, तो दिस इज अ मिरेकल ड्रग, इट्स जस्ट बीन रिलीज्ड और इससे आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे. उस बंदे ने वो ड्रग ली और वो बिल्कुल सही हो गया. 4 महीने बाद पता चला जब उसकी ट्रायल्स हुए कि द ड्रग इज एक्चुअली वेरी वेरी यूजलेस एंड इट्स नॉट डूइंग एनीथिंग. And how did the guy get better? Because he perceived himself to be better, right? And get this, 4 महीने के बाद the person actually passed away because उसको जब ये पता चला कि the drug is no good, his cancer came back and he passed away. So it really is how you perceive your life to be, right? And challenges are from Allah subhanahu wa ta'ala. So as Muslims, we believe in qadr, khayrihi wa sharrihi min Allah, right? So it is definitely from Allah. लेकिन हमें उसमें ये find करना है कि हम उसको किस तरह perceive करते हैं. Trauma is how you respond to life, right? तो हम चाहें तो trauma ले सकते हैं और definitely हम अपनी choice को नहीं give up करें. हर सिचुएशन में हमारे पास चॉइस होती है, तो ये मुख्तसर सी बात है. और ये कि हम उन चीज़ों, ये जो हमारे ऊपर जो भी आ रहा है खुदा की तरफ से, उससे हम कैसे अपने आप को बेहतर बना सकते हैं. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, क्योंकि जो मुश्किल सिचुएशंस होती है ना, दे ब्रिंग आउट द बेस्ट इन यू, Exactly. राइट? Yes. वो अंदर से जाके जो हमारी बिल्कुल सबसे बेस्ट एबिलिटीज होती हैं उनको बाहर निकालते हैं. क्या बात है. But आजकल ये हवा चली है कि हम लेडीज जो घर में बैठी हैं, we think that we don't have any self worth just because we are not stepping out of the house and earning for our family. हमारी कोई सेल्फ वर्थ नहीं है, हम किसी चीज के काबिल नहीं है. सबसे पहली बात तो ये है कि हर इंसान अपनी एक्सक्लूसिवली अपनी खूबियों और खामियों के साथ पैदा किया गया है और हर इंसान में अनलिमिटेड पोटेंशियल है, ठीक है ना. तो ये सेल्फ वर्थ वाली चीज़, सबसे पहले इसको, जो पोटेंशियल्स हमारे अंदर है ना, कॉन्फिडेंस शुड बी बेस्ड ऑन पोटेंशियल्स, राइट? कॉन्फिडेंस शुड बी बेस्ड ऑन व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव विद आवर लाइव्स, राइट? सो एक चीज़ है, देयर इज समथिंग कॉल्ड बीइंग बिजी एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड बीइंग प्रोडक्टिव, ठीक है? एंड एवरीबडी हु इज बिजी इज नॉट नेसेसरली प्रोडक्टिव, ठीक है ना. As far as women that are taking care of the house and taking care of their children and giving them their best are extremely productive women. They need to know what they are actually doing. They need to know, okay, just holding space for their children, being that face that's available to them when they come back from school, or being able to be there for their husbands or their families is a huge deal in and of itself, right? और एक और चीज़ मैं इसके साथ कहूँगी कि ये बात सच है कि women do seem to lose some of their self worth or self esteem, और उसका एक बहुत बेहतरीन तरीका उसको हैंडल करने का है कि keep yourself involved in some kind of learning at all times, whether it could be something as simple as reading a book, depending on your finances, depending on what things you're doing, लेकिन अपने आप को एक ऐसी एक्टिविटी में रखना जहाँ आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, अपने आप को एक कल से अपने आप को बेहतर बना रहे हैं. Even it's different for different people, right? But yes, you do need to keep yourself in things that genuinely interest you, make you want to get out of bed every day, right? So for some people it could be playing tennis, for some people it could be doing a podcast, for some people it could be reading a book. But yes, outside of your family there has to be something for you as well. So I do believe that, and I am in no way discounting the work that we do at home, because it is beautiful, it's important, it's what's binding our families together. Mahmooda, let's talk about teenagers and their aggressiveness. How can parents effectively deal with the teenager issues, and how can they address their aggressiveness which is coming all over again and again? So Fatima, it's a very holistic answer that I'm going to give you, right? Okay. So it's not just based on what they are thinking and feeling, but it's actually, where is it coming from? What they're consuming, their diet, what they're consuming in terms of social media, what they're having in terms of screen time, आउटडोर टाइम कितना है, ठीक है ना. वादी और मर्दी जैसी जगहों पे हम कितना लेके जा रहे हैं बच्चों को, ठीक है. स्पोर्ट्स कितना खेल रहे हैं, तो ठीक है, बच्चे हो जाते हैं कभी कभार अग्रेसिव. लेकिन पता है, एक और चीज़ जो कि आई एम लर्निंग एज वेल इज दैट हमें नॉन जजमेंट
विदाउट जजमेंट उन्हें स्पेस देनी है, उनकी बात सुनने की हमें हमारे अंदर अपनी सकत पैदा करनी है, राइट। और पेशेंस, माफ़ करना, और उनको ये कनेक्शन बिफोर करेक्शन। तो हम क्या करते हैं अक्सर, हम सिर्फ करेक्शन पे आ जाते हैं, ये ठीक करो, ये सही करो, वो करो, राइट। लेकिन उससे पहले कनेक्शन, उससे पहले ताल्लुक को खूबसूरत बनाना, रिलेशनशिप को ब्यूटीफुल बनाना, राइट। एंड ऑल्सो sometimes we see ourselves in our children, which is, yes, it's a normal natural thing, but can also be dangerous, right? तो वो अब एक न्यू इंडिविजुअल है, एक मतलब ये कि एक बो एंड एरो, वो खलील जिब्रान की फॉर्म है जो द प्रॉफिट में जो बच्चों के बारे में, राइट, कि वो तीर कमान से निकल चुका है, वो एक अलग तीर है, वो एक अलग चीज़ है, राइट। सो उसे अगेन नॉट पेरेंटिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ कंट्रोल, क्योंकि कंट्रोल से क्या होता है, कंट्रोल से बच्चा सिर्फ रिबेलियस होता है या उस वक्त के लिए चुप हो जाता है, वो एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है कि आप उस वक्त तो आपने अपना काम ले लिया, लेकिन अंदर से अग्रेसिवनेस पैदा हो जाती है ना। तो पेरेंटिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ एक्सेप्टेंस, ऑफ कंपैशन, ऑफ जेन्युइनली उसको उसकी वाइज बताना कि अच्छा ऐसा क्यों है, ऐसा मतलब उसको एक्सप्लेनेशंस देना, rather than saying it's so because I say so. So with teenagers, obviously you and I both are teen moms, yes. So we know that isn't a strategy, but yeah, and of course एक strategy जो सबसे बड़ी जो है दुआ। बिल्कुल। टॉकिंग अबाउट कंट्रोलिंग द किड्स, अगर हमको ज़्यादा आज़ादी दें तो भी बहुत ख़राब है, और अगर हम उनको बहुत ज़्यादा अंडर कंट्रोल रखें तो भी अच्छा नहीं है। देखिए, सबसे पहले ये है कि एवरी फैमिली शुड हैव सर्टन बाउंड्रीज, ठीक है, सर्टन नॉन नेगोशिएबल्स, राइट। तो वो नॉन नेगोशिएबल्स विद क्लैरिटी आप उनको इन्फोर्स करें कि मतलब अगर फॉर एग्जांपल बच्चा झूठ बोल रहा है, बदतमीजी कर रहा है, आप उससे क्लियरली कहें कि भाई दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल बिहेवियर। गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, टेंट्रम थ्रो करने की जरूरत नहीं है। एज पेरेंट्स, आई मीन वी ऑल बीन देयर, राइट। तो वो बट यस, यू कम्युनिकेट दैट इन अ वेरी क्लियर वे, ओके दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, थैंक यू। और वन ऑफ द प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज इज कि अगर एक बच्चा दरवाजा बैंग करके जा रहा है, आई डोंट हेट यू and I'm not going to do this, she's like, okay, you don't want to do it, that's fine, but can you say it again respectfully? Please say it again respectfully. So you with gentle but firm way आप उनको बता सकते हैं कि this thing is not acceptable. या अगर आपकी as a family कुछ values है, कुछ norms है कि नहीं यहाँ पे जाना मुनासिब नहीं है, तो you can say that definitely. इसका and there should be no guilt in doing that, because that's what parenting is about. It's about finding that perfect balance, right, which we're all working towards and struggling towards as well. Relationship building में एक बहुत बड़ी चीज़ है कि spending time and spending quality time sans devices, right, where you just literally feel the essence of the person कि मतलब अच्छा what is it about, where you disarm करके अपने आप को आप एक ऐसी conversation में अपने बच्चे के साथ part लेते हैं जो उसे पता चले कि he's acknowledged, he's valued, right. And then of course whenever you correct your child, एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना कि उसको shame नहीं करना, उसको ये नहीं फील कराना कि माई पेरेंट्स डोंट बिलीव इन मी, राइट। तो ये चीज़ है ना कि देखो जब हम करेक्शन करते हैं ना, करेक्शन हमें करना पड़ता है, हम पेरेंट्स हैं, हमें थोड़ा बहुत तो जिंदगी में ऐसे ही तो बाल नहीं हमने ना सफेद के या जो भी कलर के नहीं, मजाक कर रही हूँ। सो वो हमें करेक्शन हमें करनी है, लेकिन वेयर इज दैट, व्हाट काइंड ऑफ अ प्लेस इज दैट करेक्शन कमिंग फ्रॉम। और ऐसा भी होता है ना कि कभी कभार बहुत टाइम तक हमने अपने बच्चे को वो वाली स्पेस नहीं दी होती और अब हम देना चाह रहे होते हैं। It's going to be difficult. It's difficult, but it's not undoable, and it's beautiful, because then as teenagers they kind of become like your friends more than anything. True. है ना? Yes, बिल्कुल best friends. Best friends. So अब हम अपनी conversation के आखिर मरहले की तरफ आ गए हैं. Is there anything else that you would like to tell our viewers? Okay, so you know that thing that you're putting off, that thing that you don't want to do, that you can't be with, go ahead and do it. Eat that frog, right? So whatever you can't be with and whatever you're putting off, that is where the biggest gifts lie. So go ahead and conquer that. So in this episode, we spoke about women's mental health. It's okay to ask for help when you need it. You're not alone. You can go to some of your loved ones or to special people like Mahmooda, who is always ready to help you. Mahmooda, thank you so much for taking out your time for our show. Absolutely. So if you like today's enriching episode, please like, share and subscribe. And follow Mahmooda Rahman and Karak on Instagram. On this note, it's me Fatima Ali Safri signing off. Ma salama.